So hello everyone. Today is the day 26, I guess. No, day 26 of me solving 150 lead code questions, and yes, and today I guess we will be solving 27 question. Let's see. Let's move to the question. So today we'll be doing the two input array. Although I have solved this question already. The last time I solved this in May of 1. Fine. By the time we read this question, let me first read the question कि भाई question क्या कहता है. By the way, two input array is sorted. Given a one index array of integers, number that is order sorted non-decreasing number of increasing array directly sorted array will depend on also with the target number. Let these two numbers be numbers index 1 and numbers index 2, where 1 is less than index. Return the indices of the two numbers index 1 and index 2, each incremented by 1. Okay, as an integer array index 1, and the solution is not there, then there is exactly one solution. Your solution must use only constant extra space, right? Easy one.
लिटरली इतनी बढ़िया वाइब हो जाती है भाई, बीच में ऐड हट जा भाई ऐड डिजराइज। अबे यार इतनी बढ़िया वाइब है अपनी। Requirement is target lines, numbers. Yes, आएगा। It's just the second element of अच्छा मैप का जो रिक्वायरमेंट है। परफेक्ट। बाय डिफॉल्ट see this is a one way of solving this question. We'll try it using the other way also. I'm not sure कि अभी तो एरर आने बाकी है। इनफिनिट लूप में जा रहा है चल क्या रहा है भाई आ इनफिनिट लूप हो तो वो भी चल जाएगा क्या स्टोरी। क्या हो रहा है भाई नेट तो जाओ अरे ये क्या 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 हो रहा है वो क्या है। Fucking website is put down.
चल भी रहा है अपना, तो चल रहा है. Website is down, I guess. Yep, website has gone down. Let's manually do it for मेरे पास available test cases पहले manually करके देख लेते हैं. भाई भाई फोल्डर का नाम इतना बड़ा हो गया. क्या करूँ? टू सब इनपुट array sorted. To sum बच्चों है. अबे यार, cd c क्या नाम है इसका, solution डॉट cp. 2 and 6 2 and 6 आ तो सही रहा है, फिर क्या इशू हो रहा है यहाँ पे? यार क्या, क्यों चोरी कर रहा है ऐसा? हो रहा है ना. -1 किसके में आ रहा है? टारगेट -1 पुट आउट दिस. आई थिंक कोई कोई कौन सा टेस्ट केस है मेरे पास में? सॉर्टेड से तो नीड ही नहीं है. सॉर्टेड से फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे. इसमें नेगेटिव टेस्ट केस हो तो कुछ हो रहा है क्या? रिक्वायर्ड इज योर दिस. आई डोंट थिंक उसमें होना चाहिए. सही है वाला इशू है. ठीक है, टारगेट इज योर 1. आंसर इज दिस एंड दिस. 1 minus of this, 1 minus of this 2. Essential requirement is your 2. 2 is your requirement. एक मिनट. requirement अच्छा. 3 is your requirement ना, मतलब basically 1 is your target sum. 3 and 4 आ रहा है, so numbers are 0. तो आंसर तो आना चाहिए. इसमें क्या इशू है? एरर क्या है? बड़े 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 एक मिनट. एरर तो नहीं आना चाहिए यार इस वक्त में. मेरा आंसर क्या दे रहा है? 1 and 2. इट शुड बी 1 and 2. क्यों दे रहा है वो? लेकिन 1 and 2 क्यों दे रहा है? आंसर तो सही आ रहा है यार. अच्छा, ये इशू हो रहा है यार. लेकिन आई विल हैव टू रिटर्न समथिंग ना, तो मैं क्या करूँ? आई मीन सी,
एक सेकेंड, -1001 which is a requirement means it doesn't exist, तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। map dot find requirement उसकी इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ADX is your map dot requirement। आई थिंक ये मैंने सही तो लिखा है, एक मिनट रुक, इसको हटाओ, इसकी जगह पे मैप मैप ये कर देना है। हाँ, मैप के अंदर नहीं, मेरे पास में क्या रिक्वायरमेंट है, आई मीन दिस शुड बी वैलिड ना। एक मिनट, किया तो यही है मैंने मेथड को, मैप डॉट फाइंड की मेरे पास में, वही किया था मैंने। वापस ट्राई करके देखूँगा। मैप डॉट फाइंड मेरे पास में रिक्वायरमेंट, इफ इट डजंट एग्जिस्ट मेरे एंड के बराबर नहीं होगा वो, इट मीन्स इट एग्जिस्ट। उसका जो काउंटर पार्ट है वो एग्जिस्ट करता है, 1 - 0 इट एग्जिस्ट। आई मीन देयर इज नो वे कि ये एग्जिस्ट ना करे। ये कभी रिटर्न ही नहीं हो रहा, तो इसका तो कोई सीन ही नहीं है। चलो एक कान में रुके ना इस वजह से। सी यहाँ पर कोई इशू है, -1000 is your उसकी जो इंडेक्स है, that is its index। let me और भाई अभी इसको फाइनली ही हम लोग जब इंडेक्स कर देंगे तभी इट इज मच मोर बेटर टू गेट इट। डॉट सेकंड भी तो किस सेंसर होने का यार, रेटिंग मिनट्स में लगती है मेरे को, सॉरी एरर कहाँ कर रहा हूँ मैं। I don't want to waste more time on it. It is less than target. -1000, yes, it's less than target. That prefers I -1000 is your one. -1 के लिए भी जाएगा, 0 के लिए भी जाएगा। What about 1? Oh, even if it is equal, then also it should go. By the way, यहाँ पर भी आएगा, एक्सेप्ट हो गया, लेकिन 1 एंड फिर रिमेनिंग मेरे पास में 0 हो सकता है। इस तरह की मतलब मैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो मेरी वो फाइंड आउट करूँ, तो आई थिंक यहाँ पर होगा ये। Just return of the first occurrence of it, and I think let's try submitting up to यार नहीं आना चाहिए बे यार, क्या इशू हो रहा है। 2 and 7 पाक वही कितने एरर, कहाँ एरर हो रहा है, अब तो सही लिखा है। Title is your 5, it should be -5 requirement is my 10, it's not there, -3 requirement is your 8, 2 and 7 should be your answer। तो -3 के लिए रिक्वायरमेंट क्या है मेरी, 8 is your requirement, right? हाँ, तो does 8 exist in the remaining requirement में है कहीं पे 8? अरे यार मैं क्या नूपंदी कर रहा हूँ। नंबर राइट, इवन इफ इट इज ग्रेटर नहीं, मतलब एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ इसकी वजह से एरर बना, अब होना चाहिए
This should happen now. Perfect. वो एक ही लूप था, वो एरर दे रहा था बार बार. So now we'll be doing the next question since we that this was a pretty easy question. वही हम थोड़ा syntactical error कर रहे थे, थोड़ी बकवासी हो रही थी हमारे साथ. We're gonna do the next question. Count with more water. You are given an integer array, height and fine. By the time we read the question, let me just in an integer array height of length n, there are n vertical line branches that two endpoints of the height line are I comma 0 and I comma height. Vertical line two endpoints of the height line are I comma 0, I comma 0 and I comma height I. एक मिनट I comma 0 मतलब okay, 1 is your one incidence of this. That's a one index. Yeah, you can notice return the maximum amount of water a container can store. Okay. So maximum amount of water that a container can store, right? Yes. Then what's the case for it? Um, See, there is one approach which is using the DP for this specific question, but we have to solve it using the two pointer. The DP approach is actually pretty easy. Um, it is actually very easy. Should I do it? So let's for the sake of time, let me do this question using the DP, and then we'll do this question the way around. Should I do it using DP? फिर क्यों नहीं आ रही है? ऊपर से आइकन डाउन भी नहीं कर सकते. ऐड के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा. 1 and 7. I don't actually remember last time when did I do this question. This was on March 28th. Fine. We'll have to solve this question again. 1 and 7, 1 and 7, 1 and 7 is your there was kitni length of this and times of this. This is your maxima. Perfect. There is one approach which is using the n square. N square is your brute force. वो तो कभी नहीं करनी उसके through. Like BP के through and then other ways two pointer. Just place two pointers on this section. Just find out the area of this section. Just find out the area of this section and find out the area of the section. Then what should we do? We need to maximize the area, right? Then we move this section to this one. So we keep the larger value perfect. Then we move to the greater one. Which one is greater? And that's it. Using two pointer, it is way more simpler. Okay. So let's do it using the type 1 type. Perfect. Now what I do is pointer 1 is 0 and integer pointer 2 as your I dot size minus of 1.
रिटर्न द मैक्सिमम एरिया राइट. एक सेकंड एरिया ही रिटर्न करना होगा. ठीक है. सो एंटर 3 मांग गया है क्या? क्या करता रहता हूँ यार मैं. मेरी टाइपिंग बहुत गंदी है यार, क्या करूँ मैं? Rather I should call it as the width. So we have the area. Radius is your maximum between radius area and we move to the next pointer if it is greater or lesser, right? Pointer 1, the condition of moving the pointers. By the way, our thing sorted nahi hai na? We just maximizing and moving ahead and right. One which is smaller वही होगी मेरे पास में. Integer A is your I mean एक सिंपली मेरे पास में अगर PTR is less than मेरे पास में हाइट का क्या लिख रहा हूँ यार मैं, क्या लिखता रहता हूँ. थोड़ा हाथ सेट नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या सीन हो रहा है. हाँ. If height pointer 2 pointer 1 is less than your height PTR 2. I mean, there is a edge case which is if both of them are equal, है ना? If both of them are equal, in that case, what happens? So we move towards the one which has the lower one, है ना? जिसका छोटा होगा वो मूव होगा कि क्या मूव होगा? अब दोनों में से किसी के ऊपर भी मूव कर लो, कोई फर्क पड़ता है क्या? जिस वो एक यूनिट वहां से हो रहा था, एक यूनिट यहाँ से हो जाएगा. लेट्स सी इक्वल वाले केस में क्या होगा, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन otherwise तो ptr1 if the pointer 1 is less than the initial pointer, in that case ptr1 plus plus, else if it's vice versa ptr1 now. What is it for the else case, which is let's say both of them are equal? So for the case of equal, let's say, is it given that they won't be equal? Is it given? Is it given? Is it given? I dot length tends to power of 5. Is there any? Yes, they could be equal. Let's say, see for this case.
Now for this case, what happens is, what is the benefit? I mean, where is the benefit? Is it to move from 8 to 4 or is it to move from 8 to 6? We check the next number, right? We check the next number. We check the next number, and the one which is smaller, we move it. Let's say वो भी equal हुए फिर. How would you choose? No, 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 no. I think the approach is wrong. The approach is wrong of shifting the pointers. Approach wrong है भाई अपनी. Then what would be the scenario? What if we start both of the pointer from the zeroth value? 0, 0, move 1 this ahead. Increase the unit area, put it to the maximum. Put it into the maximum, perfect, perfect, perfect. The one which is क्या है मैंने लास्ट टाइम कैसे किया है वो मुझे भी याद नहीं है मैं क्या करता रहता हूँ out of the greater function, the greater function, current weight is your यही किया है मैंने एक सेकंड इसमें वो इक्वल वाला केस नहीं आ रहा किया तो मैंने यही चीज़ है फिर वो इक्वल वाला केस नहीं आएगा यहाँ पे एक सेकंड यार एक सेकंड ये तो नहीं होना चाहिए फिर मैंने कोई गलती से मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ कुछ कुछ मस्ती को नहीं ना होगी मेरे साथ किया तो यही है क्या तो यही है व्हाट आर वी रिटर्निंग देन वी आर रिटर्निंग द रिजल्टेंट क्या है cannot represent a type integer assign integer over okay. एक सेकंड फिर ये वाला एक्सेप्ट कैसे हो गया भाई इंटीजर तो ले रहा था मैं यहाँ पे was it taking long maximum area is 0 1 एक सेकंड मैंने टेस्ट केसेस चेंज कर दिए हैं क्या width is 0.2 minus 0.1 and एक सेकंड कुछ तो इशू है size minus 1 8 star cannot be represented in the type integer एक सेकंड last executed input open test case यार ये क्या हो रहा है ये is your minimum good times of temporary what kind of error is it cannot be represented in type undefined behavior it's in the line over 16 16 in here in here in here in here यार कैसे हो सकता है मैंने यही तो किया है यही तो लिखा है दिस इज द सेम कोड दिस इज द exactly same code what the fuck +1 यार किया मतलब less than right
and 1 is less than 0.2. What's the issue with the point? As I mean, the error कहाँ की है? Result is a maximum between resultant comma area. Sign integer overflow cannot be represented in type integer in the solution list. इशू क्या हो रहा है यार? वो चीज समझ में नहीं आ रही मुझे। कोड तो एग्जैक्टली सेम है यार, मतलब ग्रेटर का इतना कौन सा फर्क पड़ गया? This is your this maximum area is your 0, left minus of the right minus of left, minimum between these two, current area is your current width times current height, maximum area is your greater between these two values. Maximum के साथ में तो कोई इशू नहीं है। Let me just copy out the greater function. ये तो कोई बात नहीं हुई यार, पहले कोड एक्सेप्ट हो गया लेकिन अब नहीं हो रहा। इन्होंने टेस्ट केस एडअप करे हैं या फिर कुछ कुछ नया कुछ एडअप किया है क्या? इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम ग्रेटर का यूज करके देखो एक बारी। वही तो पूछ रहा हूँ यार, एरिया इज योर विड्थ स्टार टीएमपी। आई एम नॉट गेटिंग एरर कहाँ हो रहा है? आई एम डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। एक मिनट, लेट मी जस्ट कॉपी दिस कोड एंड जस्ट सी कि क्या ये वाला कोड भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इन्होंने टेस्ट केसेस चेंज कर दिए क्या? ये क्या बकचोदी है भाई? एक मिनट, मैंने कुछ कुछ बड़ी बकचोदी करी है मैंने। 0.1 0.2 हाइट 0.1 0.2 0.2 माइनस 0.1 विद स्टार्ट तेरे। एक सेकंड, ये वाली बकचोदी तो नहीं हुई यहाँ पे है? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने एरर कहाँ किया है। आई मीन थैंक्स फॉर वॉचिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं एरर पकड़ता हूँ पहले तो। एरर क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं आई विल जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ दी कोड्स कि मैंने कहाँ बकचोदी करी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।